Good evening, everyone. Welcome to Ansarkari. Today, we will take up newspaper of 11th December 2022. Starting with first article, our President, Srimati Draupadi Murmu, says that the concept of justice should be expanded to include environment also. She observed that if Ganga Yamuna river have been given the same legal rights as human beings, then why not? It can be expanded to other areas also, such as mountain, flora, fauna, etc. Because right now the climate change is at our doorstep. It is impacting the lifestyle of human beings and also the planet. Then this quote will be can be noted. It could be used in essay. Next article talks about G20 Sherpa meet. Before the G20 meet, where the Prime Minister and President of 20 countries meet, before that, all the diplomat, all the bureaucrat comes together to have a meaningful discussion on various topics. So regarding G20 Sherpa meet in Udaipur, India has showcasing its soft power through display of various colors and traditional Rajasthani musician dances, and also the heritage site of Kumbhalgarh Fort. Music and performance such as Bharatnatyam, Odissi, Kathak, Kathakali, Manipuri dances, and folk dance of India also presented to the delegates. Regarding G20, G20 members represent around 85% of the global GDP and 75% of the global trade. It also has 2/3 of the world population. So G20 is very important for the world diplomacy. Various global issues such as inclusive growth, multilateralism, women-led development, as well as 3F. 3F can be used in GSF 3, that is food, fuel, and fertilizer. Because all these things are impacted due to high fuel prices. So it becomes very important issue for developing and developed countries. Other issues such as tourism, culture, technology, for a resilient growth, inclusive growth, and bridging the gap between the global south and global north, there has been discussion where India is taking steps to include all the countries in G20 to formulate discussion on these topics for lowering the debt, climate financing, lowering the food and fuel-led inflation. So the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, one future, is the key point of G20 summit. So that's all for today. We will take up next newspaper of December 12th, 2022. So taking up December 12th, 2022 newspaper, first article, coming to first article, it talks about the urea subsidy. We will take up in the editorial section. Then next article, where PM talks about traditional medicine sector, which is growing and gaining global attention. Important points to be noted here, that in the field of Ayurveda, that is using herbs, manufacturing and using Ayush medicine,
The scope has increased because the business has increased from 20,000 crore to 1.5 lakh crore in only 8-9 years. Opening this led to lakhs of new jobs being created. Ayurveda has been recognized in 30 plus countries, and various other policies of the government is there promoting Ayurveda, such as All India Institute of Ayurveda in Goa, National Institute of Unani Medicine, Ghaziabad, National Institute of Homeopathy in Delhi. The next article talks about the issue of under trial. Key points in this article. First, the latest NCRB data showcases that over the last 10 years, the number of under trial in the jail has increased to around 6.2, 6.3 lakh people. Because the arbitrary use of IPC 1860 under section 124A, sedition, section 186, obstructing public servant in discharging his public function, section 188. Further, to reduce the number of under trial, there has been various reform, such as the implementation of Lok Adalat and fast track court, establishing fast track court. Further, Center is working on draft IPC and CRPC reform. Further, this article also argues that in India, jail not bail become the rule, whereas the right to bail is the safety valve and ensure that the arrested person gets a judicial hearing before any examining the executive action. Regarding under trial, some judicial cases are there, such as Sonadar versus State of Chhattisgarh, where a large number of under trial continued to languish in prison because of inability to fulfill the bail condition, even after securing bail. मतलब कि bail मिलने के बाद भी वो जेल में है. So what can be done? तो नालसा है वो असिस्ट कर सकता है इन अंडर ट्रायल को, so that they can get bail. For the next article talks about the unhealthy subsidies. This article is very much important. Whole article is important regarding subsidy. So this article argues that there has been increase in sale of diammonium phosphate DAP and also urea. The present Indian government has made mandatory for soil health card and neem coating of urea, which was supposed to promote the uses of fertilizer in agriculture and to curb the pilferage and also to curb the use of fertilizer in companies and in industrial use. So with fixing of MRP of urea at 5,600 per ton and also DAP at 27,000 ton, there is no incentive for the farmer to purchase these things. So instead of that, they are applying only urea and DAP and not other fertilizer such as NPKs and MOP. MOP means म्यूरेट ऑफ पोटास, NPKs. तो अभी जो रेशियो है NPK का वो है 4:2:1. But however,
with increase in sale of यूरिया एंड डीएपी, द जो रेशियो है वो डिस्टॉर्ट हो गया, द रेशियो हैज बीन डिस्टॉर्टेड, और टू अराउंड 13:5:1। और ये जो रेशियो है डिस्टॉर्ट होने के कारण नाइट्रोजन का जो अमाउंट है वो सॉइल में ज़्यादा हो गया, जिसके कारण इट अफेक्ट्स द क्रॉप yield and also it will also affect the health of plants, humans and animals. ये आर्टिकल वही बात करना चाह रहा है कि अगर कैप कर दिए हैं कोई पर्टिकुलर फर्टिलाइजर को और बाकी फर्टिलाइजर को नहीं किए हैं, तो एक फर्टिलाइजर का सेल बढ़ जाता है, क्योंकि जो फार्मर है उनका जो सोच है वो प्राइस के हिसाब से डिटरमाइन होता है, मतलब प्राइस अगर कम होगा तो खरीदेंगे, ऑब्वियस बात है, क्योंकि प्राइस मैटर्स। सो जो 4:2:1 जो रेशियो है वो इम्बैलेंस होके 13:5:1 हो चुका है। तो उसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो देयर आर 2 to 3 पॉइंट्स विच हैज बीन आर्ग्यूड बाय दिस आर्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट पॉइंट इज गिविंग इट शुड रिप्लेस सब्सिडी ऑन इंडिविजुअल फर्टिलाइजर। इंडिविजुअल फर्टिलाइजर सब्सिडी हटा करके एक पर हेक्टर कैश ट्रांसफर होना चाहिए कि जितना हेक्टर है और उसके हिसाब से कितना फर्टिलाइजर यूज होगा वो ट्रांसफर होना चाहिए डायरेक्ट टू द ई वॉलेंट अकाउंट, क्योंकि आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो हो ही रहा है बाकी सब स्कीम्स के लिए, विच रिगार्डिंग टू मनरेगा और पीएम जन धन योजना और पीडीएस। तो फर्टिलाइजर सब्सिडी भी डायरेक्टली ई वॉलेट में सेंड किया जा सकता है। And for that, the government can also maintain a basic stock of basic fertilizer, including यूरिया एंड डीएपी। उससे क्या होगा कि सब फर्टिलाइजर के आपस में एक एक बैलेंस रहेगा कि फार्मर जा करके एक फर्टिलाइजर खरीदेगा और बाकी जो अंडर प्राइसिंग हो रहा है यूरिया का या फिर बाकी डिस्टॉर्शन हो रहा है मार्केट में वो नहीं होगा। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है, तो वो एक पॉलिसी लाया है, जैसे वन नेशन वन फर्टिलाइजर, दैट इज सेलिंग फर्टिलाइजर अंडर सिंगल ब्रांड ऑफ भारत। भारत के अंदर से भारत के नाम पे फर्टिलाइजर बिकेगा, दैट इज भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी, भारत एनपीके, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी दैट मैन्युफैक्चर। उससे क्या होगा कि यूनिफॉर्मिटी रहेगा प्राइस में, यूनिफॉर्मिटी होगा रेशियो में, और जो यील्ड है वो अफेक्ट नहीं होगा, जो हेल्थ है, जो आदमी को जो मतलब हेल्थ है सिटीजन का वो इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट द इंडिया जीडीपी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट एंड ऑल्सो द इन्फ्लेशन। दिस आर्टिकल कंपेयर्स द इंडियाज ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन with regarding to other countries such as Turkey, Argentina, where the food inflation is around 30% and 91%. It also says that despite Ukraine-Russian war and after COVID, there has been increase in stimulus by the government, by the respective government, that has led to the increase in inflation. But in spite of that, India is maintaining 6.1% growth, real growth, and have inflation at around 6.7, 6.8%, as compared to other countries, developed countries, that is seeing lower growth at only 2.4%, 1.1% in 2022-2023। फर्दर बस ये आर्टिकल एक और चीज कह रहा है कि जो फिजिकल डेफिसिट 1.9% है, कंबाइनिंग सेंटर एंड स्टेट, और जो सरकार का एक अकाउंटेबिलिटी था towards the people, towards the parliament, that we are decreasing the fiscal deficit to around 3 to 4% slowly and to 0% in next 5 to 10 years, but वो अभी तक नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक रेवड़ी कल्चर जैसे मतलब दैट इज फ्रीबीज वो प्रमोट किया जा रहा है। फर्दर इंडिया का जो एक फूड सिक्योरिटी
एंड फ्यूल सिक्योरिटी मेजर्स है, उसके कारण जो सब्सिडी है वो बढ़ चुका है फूड, फ्यूल एंड फर्टिलाइजर के कारण। तो इसके कारण फिजिकल डेफिसिट हाई है इंडिया का। इन स्पाइट ऑफ दैट इंडिया इज मार्जिनली डूइंग बेटर कंपेयरिंग टू अदर नेशन। ये आर्टिकल ओवरऑल कहना चाह रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट यूज ऑफ कमर्शियल यूज ऑफ नाविक। तो जो इंडिया नाविक है, नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, वो अभी टू फ्रीक्वेंसी पर डेटा प्रोवाइड द पोजीशन डेटा एट टू फ्रीक्वेंसी सच एज L5 एंड एस बैंड। तो L1 फ्रीक्वेंसी पर देना चाहिए, वो इंट्रोड्यूस कर रहा है L1 फ्रीक्वेंसी। L1 फ्रीक्वेंसी से क्या होगा कि दे उससे जो फ्रीक्वेंसी है वो उसको यूज कर सकते हैं एट अ लोअर पावर थ्रू सिंगल फ्रीक्वेंसी चिप प्रेजेंट इन ट्रैकर्स, मोबाइल वेरेबल डिवाइसेस एक्सेट्रा। उससे कमर्शियल यूज ज़्यादा होगा, पब्लिक व्हीकल सेफ्टी बढ़ेगा, पावर ग्रिड सिंक्रोनाइजेशन होगा, रियल टाइम ट्रेन इंफॉर्मेशन और ग्लोबल पोजिशनिंग, फिशरमैन सेफ्टी, सब बढ़ेगा, इमरजेंसी वार्निंग, अलर्ट प्रोटोकॉल। फिर ये सब ओवरऑल जो यूसेज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके लिए लो पावर कंजम्पशन होता है जो L1 बैंड है। बाकी बैंड के लिए हाई पावर डिवाइस चाहिए जो कमर्शियल यूज के लिए रेलेवेंट नहीं है। तो ये आर्टिकल वही कहना चाह रहा है कि लो पावर L1 फ्रिक्वेंसी को यूज करना है ताकि कमर्शियल यूज बढ़ सके, जो अभी नहीं है। Then next article talks about the central subsidy bill that has increased to 5,32,000 crores of, although it was 7 lakh crore in 2020-2021 due to COVID um, stimulus, but after COVID also it has not decreased to normal level, it is increasing year by year। क्यों हो रहा है, ये इंक्रीज क्यों कर रहा है? तो इस पर एक ये आर्टिकल कहना चाह रहा है कि ड्यू टू कोविड ऑल्सो रशियन यूक्रेन वॉर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना था जिसमें फ्री ग्रेन बांटा गया अंडर द वेलफेयर स्कीम्स, उसके कारण हुआ। फर्दर फर्टिलाइजर पेट्रोलियम सब्सिडी वो बढ़ा ड्यू टू राइज इन ग्लोबल प्राइसेस ड्यू टू रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। और फर्टिलाइजर सब्सिडी जो DAP का है और फिर यूरिया का है वो तो बढ़ते जा रहा है। तो ये तीन कारण कारण जो सब्सिडी है ओवरऑल वो बढ़ते जा रहे हैं इंडिया का। फर्दर नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द राइज ऑफ अजीनोमोटो, कैसे वो राइज किया फ्रॉम जापान टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो वो एक छोटा सा आर्टिकल है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर UPSC बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट कि अजीनोमोटो का वो जापानीज बेस्ड सीजनिंग मैन्युफैक्चरर है, वो क्यों हुआ? क्योंकि अजीनोमोटो एक एक फिल्म आने वाला था, उसको दिल्ली हाईकोर्ट ने बैन कर दिया, मतलब इट हैज हॉल्टेड द रिलीज, क्योंकि वो ट्रेडमार्क जो था उसको मतलब कि ब्रीच कर रहा था अजीनोमोटो वाला। तो जो ओरिजिन ऑफ MSC, जो अजीनोमोटो का असली जो नाम है वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, और उसका ओरिजिन है जापान में 1908 में। अजीनोमोटो इज मेड बाय सीजनिंग एंड ब्रेकिंग डाउन ऑफ wheat with हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। उससे उसका जो टेस्ट है वो ना सोर होता है, ना बिटर होता है, ना स्वीट होता है, ना सॉल्टी होता है, बीच का रहता है, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एंड इट एक्सपैंडेड टू द अदर एरियाज जैसे चाइनीज एंड जापानीज इमिग्रेंट टू अजीनोमोटो टू US, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एक्सेट्रा। फर्दर देयर आर डाउट अबाउट द सेफ्टी ऑफ अजीनोमोटो, और लेकिन अभी जो है FDA US FDA ने प्रोनाउंस किया है कि जो MSG है वो सेफ है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। देन दिस आर्टिकल इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट
But this quote is very important. Data is not oil, you burn, it's gone. Data is more like air, you can't lock it up. अब ये क्यों है? क्योंकि जो ऑयल है उसको आप यूज करके खत्म कर सकते हैं, लेकिन डेटा जो है वो अगर 2008 का है, 2009 का है, तो 2000 का है, वो भी आज आप एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन. यू कैन ऑल्सो एक्सेस इट ऑनलाइन. डेटा इज देयर प्रेजेंट इन, मतलब data is there. Once you put out data, once you record everything and put on the platform online, then it is available. तो ये चीज आप लॉक नहीं कर सकते. ये बोलना चाह रहा है कि इसको आप लॉक नहीं कर सकते, इसको रोक नहीं सकते, और फैलता है डेटा. तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसका जो पॉलिसी है वो डिफरेंट रहे विद रिस्पेक्ट टू डेटा. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.